which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. Sir, just yesterday the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it. Then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. आई आस्क इन हिंदी. कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I'm asking it? Now once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if one nation, one election comes? Governments will have no others, they will have no room to take any corrective step. So which one is better? I absolutely, मैं एकदम clearly आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है. वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक. मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं. वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड into consideration and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से. मेरा सवाल ये है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है. तो क्या लगता है, क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट. 176. सर, अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही है. आपने कहा कि सर्वसम्मति से. हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्त बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने